Bismillahirrahmanirrahim. This is another type of bond which is known as ionic bonds. So if we go to the definition of the ionic bonds, so we can say that this is a type of chemical bonding that involves the electrostatic attraction between oppositely charged ions. It is the one of the main types of bonding along with covalent bonding and metallic bonding. Ions are atoms with an electrostatic charge. So first of all, you need to understand the definition of this, what I have just explained. So, for example, this is the nuclear notation of sodium. 23 is the atomic mass, 11 is the atomic number. And if I take, because we are talking about the electrostatic attraction between the oppositely charged ions. So chlorine is 35.5. Let's take the round figure, and 17. Okay. Now let's distribute how the electrons are distributed in this chlorine and sodium. I will explain in the upcoming slides, but right now you need to understand what is meant by the electrostatic attraction between the two oppositely charged ions. Sodium will give away its one electron. In doing so, the resulting protons will be 10. Okay? Total कितने थे? 11. If 11 protons are there, there must be 11 electrons. Right? Let's talk about chlorine. Chlorine will gain one electron and the number will become now gain one electron. Let me correct it first. We cannot do like this. Okay. When sodium gave away its one electron, now the position is that it has 10 protons and 11 electrons. When chlorine gains one electron, it will now 17 protons, okay, and 18 electrons. This is the basic thing to understand how the ions are formed. Now, we know that 10 protons means that there are 10 positive charges. 11 electrons means that there are 11 negative charges. Same is here, 17 positive charges and 18 negative charges. Now here, when we come over here, we cancel 10 electrons, protons with 10 electrons, and one is left. One positive charge is left. Again over here, 17 protons will cancel. 17 protons will cancel 17 electrons, okay, and one negative charge is left. In doing so, this positive charge, one remaining positive charge, is placed above the symbol. Similarly, this one extra negative charge I will place above the chlorine. This is not a sodium atom. This is sodium atom, this is chlorine atom, but this is not. This is known as sodium ion. Since it is a positively charged ion,
So it is known as cation. It is known as cation, right? This is not a chlorine. This is chlorine, but this is not the chlorine. This is known as chloride ion. This is known as sodium ion. This is known as chloride ion. RIDE. Okay, chloride ion. Since it is a negatively charged ion, so we call it anion. Anion. Right? So, as per the definition which I have just told you, that it is a bond which involves the electrostatic attraction between oppositely charged ions. So these oppositely charged ions, they have negative, this is positive charge species, this is negative charge species, and they have some electrostatic attraction. So due to this electrostatic attraction, this will become now like this. They come close and they are like this, or more simply, we can say that it's now sodium chloride. So this bond which is present in sodium chloride is called ionic bond because it is formed from the electrostatic attraction between sodium cation and chloride anion. And this bond is very strong bond. Remember, this bond is very strong bond, right? अच्छा, अब next question हमारे पास आता है कि what does an ionic bond means? So ionic bond, which is also known as electrovalent bond, इसको हम क्या कहते हैं? Which is also recognized as electrovalent bond. Right? This is also known as electrovalent bond. It is a type of linkage which is formed from the electrostatic attraction between oppositely charged ions in a chemical compound. Okay? So हम इसको electrostatic attraction क्यों कहते हैं? हम इसको electrovalent bond भी क्यों कहते हैं? Such bond forms when the valence outermost electrons of one atom are transferred permanently to the another atom. अब आपके you must have this question कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो था जो लूज हुआ यहाँ पे वो गया कहाँ पे? उसको इसने क्लोरीन एक्सेप्ट किया. Is it clear? तो one electron जो है वो transfer होता है from one area to another and it's permanent. Okay, the impact is permanent. So this is the basic theme of bonds. कुछ examples होती हैं. We need to see कि where this bond is common. तो हम कहते हैं कि it involves a cation and an ion, and the bond is typically a metal loses one electron or electrons and becomes a positive ion or cation. So one example of an ionic bond is the formation of sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide. So these are the things, right? Then the main question is that what is the difference between ionic and covalent bonds? Guys, when I give you the examples or more explanation, तो ये मैं count करती हूँ आपके quizzes में फिर, और सब कुछ slides में नहीं होता. You have to listen every explanation very carefully because
we are supposed to take your assessment in the objective form. Formative form दूसरी तो subjective form तो है ही नहीं यहाँ पे, right? The two main types of chemical bonds are ionic and covalent bonds, and of course ionic bond donates an electron to the other atom which is participating in the bond, while electrons in the covalent bond are shared equally or unequally depending upon the value of electronegativity between two non-metals. फिर क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर होता है कि मिस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द आयनिक बॉन्ड एंड दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड. इसका भी बड़ा आसान तरीका है. There is a couple different ways to determine if a bond is ionic or covalent. So if we go as per the definition, तो ionic bond is a bond between a metal and a non-metal. याद रखिएगा, एक metal होगा और दूसरा non-metal होगा. जबकि covalent bond is between two non-metals. So this is the major difference. ठीक है? You can see the metals when we go through the periodic table. There you can be able to identify that which area of the periodic table has metals, non-metals, transition metals, metalloids, gases, and so on. So major difference is this, that ionic bond is always a bond between a metal and non-metal, whereas the covalent bond is always between the two non-metals. And these ionic bonds, they are very strong bonds as compared to the covalent bonds. So अगर हम strongest bond की बात करें कि कौन सा है, तो हम कहते हैं कि the strongest bond is the ionic bond. फिर different examples आपको दी जाएंगी आपकी उसके अंदर activities के अंदर. इसमें आप लिथियम फ्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड. अब लिथियम फ्लोराइड में लिथियम इज द मेटल एंड फ्लोराइड इज नॉन मेटल. लिथियम क्लोराइड, लिथियम इज द मेटल एंड फ्लोराइड इज नॉन मेटल. सोडियम फ्लोराइड, सोडियम इज मेटल एंड फ्लोराइड इज नॉन मेटल. सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज मेटल एंड फ्लोराइड इज नॉन मेटल, एंड सो ऑन. So हमारे पास basically 3 different types of bonds हैं. Ionic bonds, covalent bonds, and metallic bonds. So I'll give you a brief introduction of metallic bonds also, but it is not in your course right now. तो थोड़ा सा squeeze किया है course को. So I will only focus to ionic bonds and covalent bonds. So these are the basic information before we dive into the depth. So ये अब आपको सारा समझ आ जाएगा because I have given you some information which will definitely help you to understand the upcoming slides. So ionic bonding compounds contain metal and non-metal. This is established, this fact is established right now. And you know that metals form positive ions and non-metals they form negative ions. So अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि source of cations and source of anions कौन सी हैं. Next है कि we need to understand the properties also. तो ionic compounds में major 3 properties होती हैं. Number 1, they conduct electricity when molten or in a solution state. High melting points and high boiling points due to the very strong bond between the ions, and a large energy is required to break these bonds. From crystalline structures, इनके structures होते हैं well developed, well defined with well accurate angles के साथ इनके crystalline structures होते हैं. And of course forces between the ions are very strong. And दूसरी बात ये होती है कि जो covalent bond होता है वो directional होता है, right? And directional जो ज़्यादा power होती है that is towards the more electronegative species. For example, if the bond exists between HCl, hydrochloric acid, so chlorine is a having high value of electronegativity, so most of the time the electrons remains in the vicinity of chlorine. So direction कहाँ होती है electron density की, that is towards the
chlorine. But these ionic bonds, they are non-directional bonds. इनकी strength चारों तरफ एक ही जितनी होती है. So non-directional bonds and the strength of the bond equal in all directions. Now, this is the very common structure of sodium chloride, table salt, नमक जो है, structure of sodium chloride. Purple इसमें sodium ions हैं और green इसमें chloride ions. So ये एक face scented cubic फेस सेंटेड क्यूबिक लैटिस है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स का, और हर क्रिस्टल जो है वो 6 अपने नेबर आयन से सराउंडेड है. so इसे हम कहते हैं जाइंट लैटिस. इसकी क्लोजली एग्जामिन करें पिक्चर तो इट्स लाइक दिस. वेल डेफिनेट ज्योमेट्री, एक्यूरेट एंगल्स, राइट. और अगर हम इसको क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को एज ए मतलब 2D में देखें तो इट्स लाइक दिस. आपको बीच में कोई एक आध स्पेस नजर आएगी एंड उसको आप रहने दें, वो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है. बस आप क्रिस्टल को देखें कि सोडियम है, सोडियम के इस तरफ क्लोराइड है, इस तरफ क्लोराइड है, इस तरफ सोडियम है, सोडियम के सामने क्लोराइड है, इसके सामने क्लोराइड है. तो एक जो है और एक इसके पीछे होगा सोडियम के क्लोराइड. So one जो है, एक जो आयन है, this one, this, it is surrounded by these एक इसकी बैक पे है क्लोराइड, राइट, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पिक्चर 2D है. So this is surrounded by 6 ions. Now we come to the formation of sodium chloride. ठीक है. So, सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड की. ठीक है. सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का. जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, यहाँ भी इक्वेशंस होती हैं. सो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे? 1s2. 1s में कितने होंगे? 2. नेक्स्ट शेल पे आ जाएं, 2s में कितने होंगे? अगेन 2. अब यहाँ पर P भी है, सो 2P में कितने होंगे? 6, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 ही आती हैं. टोटल इस शेल में 8 होते हैं, लेकिन फर्दर सब शेल्स में अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो 2 होते हैं S में और 6 होते हैं. दीज आर 10. इसके बाद हम आ जाते हैं, अब देयर इज नो प्लेस, चले मैं इधर लिख लेती हूँ. इसके बाद हम आ जाते हैं 3, 1s2, फिर आ जाएगा 3s. अब 6 into 10 electrons are accommodated over here and 1 is left, so I will put that one in S. This is the electronic configuration of sodium chloride. Let's have the electronic configuration of chlorine. Chlorine, ठीक है, 17 atomic number, 17 electrons. First shell में कितने होंगे? We can accommodate 2, right? In the second, 2s, 2, 2p6, right? Then we come to 3, 3s में 2, 3p में 6, काउंट करें जरा, 4, ये ज्यादा हो गए हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये फिर 10 हो गए, 10, 12, ये 18 हो गए. यहाँ 5 हैं, ठीक है, यहाँ 5 हैं. इसको मैं रब कर दूं यहाँ पे, एक मिनट, ये इसमें 5 आएगा. अब अगर हम इसको शेल्स के हिसाब से देखें कि फर्स्ट शेल कौन सा है, तो दिस इज द फर्स्ट शेल
this is the second shell, ठीक है, and this is the third shell. तो थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, राइट? एक इलेक्ट्रॉन कम है, अदरवाइज इट विल गेट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. यहाँ पर जो थर्ड शेल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे अगर आप शेल्स को देखें तो दिस इज द फर्स्ट शेल एंड this is the second shell. 2 is the number of shell. This is the third shell. So यहाँ third shell में only 1 electron, or here the third shell has 7 electrons. Now it's very difficult for sodium to get 7 electrons to complete this shell, third shell. Similarly, it's very difficult for chlorine to give away these 7 electrons so that फिर उसका second shell जो होगा वो complete होगा. Now come to this way. Come to this example. ये आ गया sodium atom with 1 electron. ये इसका 1 electron. Right? Now electron is transferred to chlorine. Chlorine है इसका, ये 7 electrons है. तो इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर करना है, राइट? सो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, राइट? सो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड हो गया, राइट? यही हो रहा है ना. अब इसकी डायग्रामेटिक फिगर भी देखें. So when this 1 electron was transferred to chlorine, तो सोडियम के ऊपर प्लस का निशान आ गया. Now you can see कि inner shell में 2 electrons हैं और second shell में पूरे 8 electrons हैं. तो ये shell जो है this one ये खत्म हो जाएगा, ये वाला, right? तो ये stable है now. Come over here. You can see कि after the transference of this 1 electron, ये जो ये यहाँ पे आ गया, तो now वो एक डेफिशिएंसी जो थी इलेक्ट्रॉन की पूरी हो गई. नाउ द थर्ड शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स और सिचुएशन इसकी जो है वो ये आ गई 2 8 8 2 8 पॉजिटिव. सो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे कम क्लोज एंड देन अल्टीमेटली दे फॉर्म लाइक दिस, और you can simply write sodium chloride. Sodium is metal and chloride is non-metal. So ionic bonds are formed. This is all about yes. एक और चीज जो है वो हमने चेक करनी है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब मैग्नीशियम को अगर हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का अगर हमने करना है तो ये हम एक्चुअली कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड. Now there is a difference between this bond जो अभी हमने लर्न किया just right now, sodium chloride and magnesium chloride. What's the difference? Yes, of course, the difference is that the sodium chloride has 1 chlorine and it has 2 chlorines. ठीक है. वजह इसकी ये है कि सोडियम ग्रुप 1 में है. तो सिंपल वे जो मैं आपको देना चाहती हूँ, सिंस सोडियम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 1 इसलिए उसके आगे एक ही आएगी. मैग्नीशियम जो है इट इज इन द ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 में है इसलिए ये क्लोरीन्स 2 क्लोरीन्स लेगा. मैं इससे ज़्यादा सिंपल आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जिस वक्त व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल, then I'll give you a detailed explanation that what is the role of groups in the periodic table. So magnesium जो है it is in the group of the group 2 of the periodic table, लिहाजा ये कितने electrons lose करेगा? 2. सोडियम ने कितने किए? ग्रुप 1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एक आपके पास मैग्नीशियम है
इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर दिए हैं, इसके ऊपर 2 चार्जेस आ गए पॉजिटिव। एक चार्ज को बैलेंस करेगी एक क्लोरीन, ठीक है, 1 क्लोरीन, और दूसरे चार्ज को बैलेंस करेगी दूसरी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो एक क्लोरीन पिक कर लेगी और दूसरा दूसरी क्लोरीन पिक कर लेगी, राइट? Is that clear? So let's see the picture to understand it. This is the way. अब ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इसको जरा बड़ा कर लिया, राइट? मैग्नीशियम के पास जो आउटर मोस्ट ग्रुप है इसका, let me mark that blue. This is the outermost orbital of chlorine, magnesium. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 ये है और एक ये, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर हाउ मेनी चार्जेस विल कम? अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये एक क्लोरीन ने पिक कर लिया और फ्रॉम हियर दिस क्लोरीन पिक दिस इलेक्ट्रॉन। इन डूइंग सो मैग्नीशियम इज नाउ दिस। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस 2 plus, right? So this electron is picked by, in doing so chlorine के outermost orbital में 8 electrons, ठीक है? So it has become now this. This electron is also picked by the chlorine, and chlorine has now, this chlorine has also now become an ion. अब आप इनको combine कर लें, ठीक है, यहां से ये इसके करीब, यहां से ये इसके करीब, राइट? इन डूइंग सो यू कैन सी कि ये आपका बॉन्ड बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ऐसे होगा बॉन्ड शो, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक चार्ज के साथ क्लोरीन और दूसरे चार्ज के साथ दूसरी। सो दिस इज हाउ द, अब इसी तरह अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3, तो कितने क्लोरीन क्लोराइड आयन एन आयन्स आएंगे? 3, 1 2 3, क्योंकि ये एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड बाय 1 क्लोरीन एंड बिकम क्लोराइड एन आयन। सो हमारा फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हमने इसको नहीं लिखना क्योंकि फिर आप कंफ्यूज कर लेंगे इसको कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ। हम इसको सिंपल लिखेंगे M G Cl2, राइट? और जब एल्यूमिनियम के 3 आ जाएंगे तो वी विल राइट A aluminium Cl3. Aluminium is metal and chlorine is non-metal. So I hope that you understand all this thing, how the ionic bonds are formed. Thank you so much.